Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 34 for the subject of operating systems. In this lecture we are going to discuss about the file system and the file management function of an operating system. So here are different objectives of this lecture. We will talk about the concept of file, its types and extensions. Then we will see different file attributes and operations, and at the end we will move towards the directories, that what are the kinds of directories and what is the directory structure and how we can share files and directories and protect them from unauthorized access. Now here is the concept of file. A file is basic unit of data storage. So it is contiguous logical address space. Now the logical address of file is folder, subfolders, file name and extensions. However, the actual address of file is the address on the secondary storage medium. To identify one file from another, we will use the file path and its name and its extensions. Now what are the types of files? We have data files that can contain numerics, characters and binaries. We can also have program files that contains instructions operating on some data. Now contents of a file are defined by the file creator. A person who creates the file is known as file creator. So we have many files like text files, source files and executable files. जैसे अगर हम ये नोटपैड ओपन करते हैं तो इससे जो फाइल बनेगी वो सिंपल टेक्स्ट फाइल बनेगी. अगर हम C++ के एडिटर में कोई कोड लिखते हैं और उसको सेव करते हैं वो सोर्स फाइल बनेगी. जब हम C++ की किसी फाइल को कंपाइल कर देंगे तो वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी. सो हेयर आर सम मोर types of files. We have executable files like I have discussed .exe. Then we have .text files, .txt. Then we have .bin files that are binary files. Then we have .bat files that are known as batch files. Then we have .cpp, .java or .vb as source files. Then we have image files just like star.jpg, .png or .gif or .tiff. These are image files. Then we have video files like .mp4. Then we have .mkv, then .avi. We can also have audio files like .mp2, mp3, .mp2 or .wav, .acc. These are different audio types. So here are different file types and their extensions. तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं. यहाँ पर लाइब्रेरी फाइल्स हैं जिसको हम कहते हैं lib फाइल या .h फाइल जैसे header फाइल. So these are basically name relating to the extensions. Now what are different attributes of a file? The first attribute is the name. Now each file that we store in our computer system or our mobile phone has a specific name. What is the name of file? It depends upon the user, but it is always good to use human readable names so that we can distinguish one file from another. अब जैसे इस लेक्चर की आपको फाइल मिल रही है तो इसमें सबसे पहले आपका क्लास नेम लिखा है, फिर उसके बाद आपका सेमेस्टर लिखा है, फिर कोर्स कोड लिखा है और आगे लेक्चर नंबर लिखा है. सो इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव नेम दैट डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ फाइल. So it makes us to identify this file easier. Now the second attribute is identifier. Each file has a unique tag or a number that is used by the operating system to distinguish one file from another in a file system. Third, we have file type. Each file can be opened with one or multiple programs, so our operating system needs information about this also कि हम इस फाइल को किस सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे. जैसे .docx फाइल है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो यूज दिस इंफॉर्मेशन to see
that this file will always be open with the help of Microsoft Word. Then we have a location. जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि हर फाइल की एक लॉजिकल लोकेशन होगी जिसमें हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव का पाथ आ जाएगा, पार्टीशन आ जाएगी, फोल्डर सब फोल्डर आ जाएंगे, फिर फाइल का नेम और एक्सटेंशन आ जाएगा. दैट इज़ बेसिकली लॉजिकल लोकेशन ऑफ फाइल. हाउएवर ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो मेंटेन्स फिजिकल pointers to a file. Then each file has its size, like in MBs, KBs or GBs also. Then we have protection attributes. We can control the access to the file. We can control who can read the file, who can write the file, who can run the file, or who can delete the file. Similarly, each file also has a time, date and user identification information. कि फ़ाइल किस टाइम पर क्रिएट की, किस डेट पर क्रिएट की, इसको लास्ट मॉडिफाई किसने किया, किस यूज़र ने इस फाइल पर काम किया. सो दीज आर फॉर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी एंड यूजेज मॉनिटरिंग. सिमिलरली इंफॉर्मेशन अबाउट ईच फाइल आर kept in directory structure and directory structure is maintained on the disk. In order to ensure the correctness of file, various other attributes are attached to it that are known as checksums. जब आप फाइल्स को zip फोल्डर में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर ये checksums की टेक्निक यूज़ होती है. Nevertheless, information is kept in the directory structure. So here are different file operations. You can create a file. You can write at any pointer location of file. You can read the file. You can change the positioning of file. जैसे मैं यहाँ पर slides पे मूव कर रहा हूँ. So this is basically repositioning or seek. मैं इस slide को read कर रहा हूँ. This is reading. Now whenever I type something here, this is write operation. So अगर इसी तरह मैं इन slides को up down कर दूँ, so this is basically reposition. मैं इन दो को आपस में चेंज कर दूँ, this is repositioning. डिलीट कर सकते हैं फाइल को. फाइल को आप ट्रंकेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट डज ट्रंकेट मीन्स? टू एम्प्टी ए फाइल. यानी फाइल आपके पास स्टोर्ड ही रहे लेकिन उसमें जो कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाए. जैसे ये पावर पॉइंट की फाइल है, ये स्टोर है लेकिन इसमें से सारी स्लाइड्स में रिमूव कर दूँ. सो दैट इज बेसिकली ट्रंकेशन. सिमिलरली यू कैन ओपन द फाइल. So whenever you double click a file, the file is loaded into the memory. That is basically open file. And when you close the file, it is moved from RAM to the disk. So this is basically closing a file. तो जैसे मैं ये close का बटन प्रेस करूँगा, मैं close operation perform करूँगा. Now we have an operation open files. Now this function requires some piece of data that are used to opening the file. First one is open file table. Open file table keep tracks of the files that are already opened. For example, ये फाइल मेरे पास 34th लेक्चर पहले से ओपन है. सो अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको दोबारा ओपन नहीं करेगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिकॉर्ड है कि ये फाइल मैंने पहले से ओपन किया, लिहाजा यही यूज़र को डिस्प्ले करवा दो. सो दिस इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम ओपन फाइल टेबल. नेक्स्ट वी हैव फाइल पॉइंटर. पॉइंटर टू द लास्ट रीड राइट लोकेशन ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज द पॉइंटर. नाउ लेट्स सपोज मैं इसको सेव करता हूँ और क्लोज करता हूँ और मैं दोबारा से इस फाइल को ओपन करता हूँ. सो दिस शोज दैट वी वर एट स्लाइड 8. सो दिस इज बेसिकली आवर रीड राइट पॉइंटर or file pointer. Then we have a file open count. File open count counts the number of times a file has been opened to allow addition of data or removal of data. That is the counting purpose. Then we have disk location of file and then we have access rights. So what are the access rights? अगर मैं इस फाइल पर राइट क्लिक करूँ, प्रॉपर्टीज़ पर जाऊँ और सिक्योरिटी पर चला जाऊँ, सो ये access rights हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज यूज़र एंड दीज आर द एक्सेस राइट्स दैट आई कैन रीड इट, आई कैन एग्जीक्यूट इट एंड आई कैन परफॉर्म अदर ऑपरेशंस. देयर आर अदर also that administrator have full control over these files. This is
then we can have authenticated users, we can have system users. So हर फाइल के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा राइट की इंफॉर्मेशन होती है. Now for opening a file we need open file locking structure. So open file locking structure is provided by the operating system. Now it is similar to read write lock. Sometimes we have a shared lock and sometimes we have an exclusive lock. Now what is a shared lock? जैसे हमने CPU सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी कि अगर एक पीस ऑफ डाटा या डाटा फाइल है, अगर उसको सेवरल प्रोसेस रीड करना चाहें तो वो रीड कर सकते हैं. सो इट मीन्स दैट कि वो रीड कर सकते हैं लेकिन उस पर राइट नहीं कर सकते. दिस इज शेयर्ड लॉक दैट मल्टीपल प्रोसेसेस कैन रीड द फाइल एट द सेम टाइम. देन वी हैव एक्सक्लूसिव लॉक और ए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव लॉक और म्यूटेक्स लॉक. ये राइटर सिनेरियो पे अप्लाई होता है, यानी अगर एक प्रोसेस एक फाइल को राइट कर रहा है तो किसी और प्रोसेस को हम राइट करने की परमिशन नहीं देंगे. दिस इज म्यूटेक्स लॉक. So this basically manages the access to a file. We can have mandatory or advisory locking as well. So what is mandatory locking? Access is denied depending on the lock held and request. जैसे अगर हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव लॉक या रीड ओनली लॉक लगा दें तो अगर हम उस रीड ओनली फाइल में कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लिख नहीं सकेंगे. सो एक्सेस इज डिनाइड. Now we have advisory lock. Now processes can find out the status of locks and decide what to do. For example, ये फाइल ओपन है, मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ तो ये फाइल डिलीट नहीं होती. Now this means that this file is using an advisory lock. A process attempts to delete the file but finds out that this file is in read write mode, so it doesn't allow us to delete the file. Then we have a file structure. A file can have no structure at all. We can have sequence of words or sequence of bytes. Then files can have simple record structure in which we will store data in the form of lines. Then we can have fixed length records that each line will contain 5 characters. This is fixed length record. We can have a variable length record that every line can contain different number of characters or words. In addition to this simple record structure, we can also have complex structures like formatted documents like Microsoft Word, Excel or PowerPoint. We can have relocatable load files that are used to load process. So file structure is decided by the operating system and the program that is used to create the files. Now we have sequential access file. Now what is sequential access file? जिस सीक्वेंस में हमने डाटा लिखा होगा उसी सीक्वेंस में हम डाटा रीड करेंगे. जैसे अगर आप ऑडियो कैसेट की बात करें या वीडियो कैसेट की बात करें तो जिस सीक्वेंस में हमने डाटा रिकॉर्ड किया होता है उसी सीक्वेंस में हम उसे प्ले कर सकते हैं. सो अगर हम करंट पोजीशन पर हैं, अगर हमने बैकवर्ड जाना तो हम रिवाइंड करेंगे, अगर हमने एंड की तरफ जाना तो हम फॉरवर्ड करेंगे या रीड एंड राइट करेंगे. सो दिस इज बेसिकली sequential access file. We can also have random access file or direct access file. In a direct access file we can jump to any part of a file whenever we want. तो जितने भी मॉडर्न हमारे पास फाइल फॉर्मेट्स हैं वो रैंडम एक्सेस मेथड को यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू हम इजीली फाइल में एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकते हैं. So here are index and relative files. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक इंडेक्स क्रिएट किया है जिसमें हमने किसी भी पर्सन का रिकॉर्ड का इंडेक्स रखा है और फिर हर पर्सन के लिए एक रिलेटिव फाइल हमने अलग से क्रिएट कर लिया है. सो वी विल फाइंड द लास्ट नेम एंड फ्रॉम द लास्ट नेम वी कैन फाइंड आउट द रिकॉर्ड नंबर ऑफ ए फाइल एंड फ्रॉम दैट वी कैन गो टू द रिलेटिव फाइल इन ऑर्डर टू सी द रिकॉर्ड. नेक्स्ट वी हैव डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. A directory structure is a collection of nodes that contains information about all files. Just like here we have directories and here we have files. So a directory structure and file structure both exist on a disk. Now what is a directory structure? A disk is divided into different partitions like C, D, E, F. We can have primary partition, extended partition and logical drives as well.
Similarly, we can use multiple disks or partition in redundant array of independent disks in order to secure our data. Disk or partition can be used raw without a file system for swap file, and in order to store data, directories and files, we need to use in the formatted way. So partitions are also known as mini disk. So each partition is known as volume. Now a volume can contain different directories and different files. So each volume will have associated file system. Now what are different types of file system? Each operating system has different file systems, but for Windows we have the following common file systems like FAT, file allocation table, 16, 32, then network file system, NTFS, then compact disk file system for CDs and DVDs. For Linux we have ext3, ext4 file systems. Now what are the operations on a directory? You can search a directory for a specific file, you can create a file inside a directory, you can delete a file inside a directory, you can find out list of files in a directory, you can rename a file in a directory, and you can traverse the file system. तो जिसके लिए आप एक्सप्लोरर को यूज़ करते हैं विंडोज़ में, जो आपको ड्राइव्स भी दिखा देता है, आपको डायरेक्टरीज भी दिखा देता है और फाइल्स भी दिखा देता है. नाउ वी हैव डायरेक्टरी organization. Directories are organized logically in order to obtain the efficiency so that we can quickly allocate the files. Naming, we can conveniently name different files. Different users can create their own directories and place their files there, and we can contain grouping as well. जैसे हम songs की फाइल डायरेक्टरी बना लेते हैं, हम सेमेस्टर के डाटा की डायरेक्टरी बना लेते हैं, असाइनमेंट्स की फाइल डायरेक्टरी बना लेते हैं. So a directory organization is used to create a grouping of directories, is used to naming files and for the efficiency of search. Now we have a single level directory. In a single level directory, for each user we can have a single directory, and the files of a single user are placed inside this directory. Now we have naming problem. Now what is naming problem? Suppose this is a user A and it has a file a.docx. सो इस फोल्डर में कोई दूसरी फाइल a.docx के नाम से नहीं आ सकती. ये एक नेमिंग प्रॉब्लम है. नाउ व्हाट इज़ ग्रुपिंग प्रॉब्लम? क्योंकि हर यूज़र के लिए हमारे पास डायरेक्टरी एक है, सो वी कैन नॉट क्रिएट ग्रुप ऑफ फाइल्स. नाउ वी हैव टू लेवल डायरेक्टरीज. हेयर वी हैव ए मास्टर डायरेक्टरी फॉर ईच यूज़र, and in the master directory of each user we can have multiple sub directories, and each directory can contain different file names. For example, here is user 3, this is the master directory, and this master directory contains two further directories that are known as A and test, and each directory can contain different files. So in this case we will require path name like main directory and sub directory. User can have same files for the different users. User 1 जो है वो a.docx के नाम से फाइल स्टोर कर सकता है. यूज़र 2 जो है वो भी a.docx के नाम से फाइल स्टोर कर सकता है. सर्चिंग जो है एफिशिएंट है, लेकिन इसमें भी ग्रुपिंग का हमें स्टिल प्रॉब्लम है. देन वी हैव ए ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी. वी कैन हैव ए रूट डायरेक्टरी फॉर यूजर्स, एंड वी कैन हैव मल्टीपल डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स फॉर ईच यूज़र एज वेल. सो ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी में एक यूज़र के पास उसके अपने मेन फोल्डर्स और सब फोल्डर्स हो सकते हैं, और इसमें हमारी नेमिंग प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाती है, इसमें हमारी ग्रुपिंग की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाती है. सो ए ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी प्रोवाइड्स एफिशिएंट सर्चिंग एंड ग्रुपिंग कैपेबिलिटी. नाउ वी हैव फाइल शेयरिंग. इन ए नेटवर्क सिस्टम वी नीड फाइल शेयरिंग. फाइल शेयरिंग इज़ रिक्वायर्ड ऑन मल्टी यूज़र सिस्टम्स. इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं या फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं. सो फाइल शेयरिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्शन स्कीम. ऑन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम files may be shared across a network, because in a distributed system we have multiple computers connected with the help of communication cables. So for this we use the network file system, that is common distributed file sharing mechanism. Now how files are protected? In a multi-user system, files are protected by using the user IDs,
and group IDs. A user ID identifies a specific user जिसके अकॉर्डिंग हम परमिशंस और प्रोटेक्शन असाइन कर सकते हैं, एंड ग्रुप आईडी अलाउज ए ग्रुप ऑफ यूजर्स फॉर मैनेजिंग द एक्सेस. फॉर एग्जांपल हम इस फाइल पर राइट क्लिक करते हैं तो आपको सिक्योरिटी में ये यूज़र नज़र आ रहे हैं. नाउ दिस एडमिनिस्ट्रेटर्स इज़ ए ग्रुप, दिस यूजर्स इज़ ए ग्रुप. सो अगर हम एडिट पर जाएं या एडवांस पर जाएं तो हम यहाँ से परमिशन भी चेंज कर सकते हैं, ऑनर भी चेक कर सकते हैं, ऑडिटिंग भी कर सकते हैं, और इवन कि हम यहाँ पर यूज़र्स को ऐड भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एडिट पर गया, मैं यहाँ से ऐड पर जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स आती है कि हमने यूज़र्स को ऐड करना या ग्रुप्स को ऐड करना. तो इसके थ्रू हम प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म लगा सकते हैं फाइल शेयरिंग पर, ताकि यूज़र फाइल को किस लेवल तक एक्सेस कर सकें. सो वी हैव ओनर ऑफ डायरेक्टरीज और owner of group of files. Now what is protection? A file owner or creator should be able to control the authorization and authentication. Now what is authentication? These are two classical things that are discussed in the information security और computer security discipline. Authentication ये बताती है कि हम किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं. यानी जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करते हैं, हम अपना पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, सो बेसिकली विंडोज़ ये चेक करती है कि हम ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं या नहीं. सेकेंडली ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि हम ऑथेंटिकेटेड तो हैं, लेकिन हमारा अथॉरिटी लेवल क्या है. क्या हम सिर्फ फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्या हम सिर्फ फाइल को व्यू कर सकते हैं, क्या हम फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या हम फाइल को एडिट भी कर सकते हैं. सो ऑथराइजेशन डिफाइंस द अथॉरिटी लेवल. So here are example of administrator users and guest users. जैसे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को लॉगिन करने के लिए पासवर्ड चाहिए, दैट इज़ ऑथेंटिकेशन. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, अनइंस्टॉल कर सकता है, दिस इज़ ऑथराइजेशन. लेकिन अगर आप गेस्ट यूज़र की बात करें तो गेस्ट यूज़र जो है वो इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को यूज़ तो कर सकता है, लेकिन उन सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल नहीं कर सकता. सो दैट इज़ बेसिकली ऑथराइजेशन. So there are different types of access: read access, write access, execute access, append access, delete access and list access. read access का मतलब है कि हम सिर्फ फाइल को रीड करेंगे, उसमें कंटेंट्स चेंज नहीं कर सकते. write access का मतलब है कि उसके कंटेंट्स में हम राइट कर सकते हैं. execute का मतलब है कि कोई सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. append का मतलब है कि हम फाइल के एंड पर कोई चीज़ें अपडेट भी कर सकते हैं. और डिलीट का मतलब है कि हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं. और लिस्ट का मतलब है किसी भी डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं उनकी हम डिटेल्स को चेक कर सकते हैं. सो दिस वाज आवर लेक्चर अबाउट फाइल सिस्टम.